how to download VLC media player for Windows 11 and 10. So let's start it. First of all, click the choose your favorite browser. I have Chrome browser. Then you can see VLC is already installed in my PC, but I search here VLC media player. You can search here, then go to the video line, and this is official website. So click on it, and then go to this page, and you can see download VLC पर 64 बिट का है विंडोज के लिए. तो क्लिक ऑन इट एंड क्लिक ऑन विंडोज 64 बिट, not any other. If your system is Mac OS, then click on it. And Linux, Android, so I have Windows 64 bit, then click on it. And you can see downloading VLC 3.0.21 for Windows 64 bit, and you can see automatically download the VLC file. So I have this file, and you can see this file is downloaded, and click on this file and double click on this, click on this, yes, and welcome to VLC media player setup, and then click on next. I have already a VLC player, so this option is present showing. Then if I have, then click on it. No, if आपके डेस्कटॉप में ये VLC प्लेयर नहीं रहेगा, then click on next. तो आपको नेक्स्ट पर ही क्लिक करना होगा. तो क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड फॉलो द ऑल रूल. तो अगर आपके पास VLC प्लेयर नहीं इंस्टॉल है तो आपके पास ये इंस्टॉल हो जाए. तो दिस इज हाउ टू इंस्टॉल VLC प्लेयर इन विंडोज 10 और 11. तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो. बिकॉज एंड यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए ये हमें इंस्टॉल नहीं करने दे रहा है. तो क्लिक ऑन अबाउट एंड क्लिक ऑन कैंसिल. जो मुझे कैंसिल करना पड़ा क्योंकि मुझे मेरे फाइल में जो है डेस्कटॉप में ये पहले से ही इंस्टॉल है. यहाँ पर आप देख सकते हो. थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस. प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना भाई.